कुछ फाउंडर्स होते हैं और कुछ स्टार्टअप्स होते हैं जो इन्वेस्टर डार्लिंग्स बन जाते हैं, राइट? दे आर वेरी इजी टू अट्रैक्ट मनी रिगार्डलेस ऑफ रेवेन्यू मल्टीपल, टेक्नोलॉजी बिजनेस, नॉट टेक्नोलॉजी बिजनेस. मतलब वी हैव सीन दिस केस, लाइक WeWork वाज अ क्लासिक एग्जांपल. ऑल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड and invested just on his word. कोई रेवेन्यू का मल्टीपल नहीं सेंस करता, कुछ भी सेंस नहीं कर रहा था, राइट? नो वैल्यूएशन वाज मेकिंग सेंस. सो लॉजिकली कुछ स्टार्टअप्स होते हैं जो सेंस नहीं करते बट फिर भी वो बहुत पैसे अट्रैक्ट करते हैं. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्टअप जो इन्वेस्टर डार्लिंग बन जाता है वर्सेस स्टार्टअप जो नहीं बनता? सो आई एम गोना से समथिंग थोड़ी सी आपको लगेगी कि कॉन्ट्रडिक्टरी बात. जब टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में at times you have to suspend the analysis. I mean, I'll tell you a story. So I think might have been maybe first पहली डील मैंने करी थी SoftBank के साथ was Indian deal with Ola Cabs, भविष अग्रवाल. So मैं भविष के साथ बैठा टोक्यो में, ये डील नेगोशिएट की. तो मुझे उस समय लग रहा था भविष very dynamic. I mean, just a great entrepreneur to back. Masa saw it, I saw it, very impressive. But जब valuation की, when I started looking at numbers, at the time, you were actually being paid to write. Not only were you not making money, you weren't even making revenue. Yeah. Right? I mean, think about that. Crazy idea. You're not even making revenue. आप लोगों को पैसे दे रहे हो to come and write. Not only free writing, you're being paid to write. Right? ये बहुत अजीब बात है. तो मुझे लगा कि how can I value this business? When you do analysis, the way I've been taught, you look at free cash flow. पूरा cash flow project करो, फिर discount करो, and then you decide how much is the business worth. But there is no revenue, there is no cash flow. सिर्फ खर्चा है. हाँ, सिर्फ खर्चा. So मैंने जब मासा के साथ बात करी, निकेश के साथ बात करी. निकेश, very close friend of mine, kind of brilliant man, Indian from Delhi also. Now chairman CEO of Palo Alto Networks. मैंने बात करी तो संस्थान ने ये बोला कि imagine a world where all cars are autonomous. तो मतलब इस दुनिया में जब cars are autonomous, there's no drivers. And in that world, right now, if you go on Ola or Uber, जो भी आप ride करो, ride sharing, आप क्या fare might be 100 rupees. तो उसमें 100 रुपए में 70 रुपए जाएंगे ड्राइवर के पास. Right? That's just a leakage. That's like the revenue is 30 रुपए आपका revenue होगा, right? अब जब cars autonomous हो गई तो आपका 70% gone, right? So then everything comes to you. Now, who will own these cars? कौन, capital expenditure, कुछ पता नहीं, because they don't exist. So it really, some of these models become, you just know कि ये evolution होगी, and these models will be worth a lot, these business models, in a world which is completely different from today. Future की बात है. So you have to suspend the analytics a little bit. So which is why, जब जैसे आपने बोला कि why are people investing in certain entrepreneurs or in certain business models where they're not making any money right now? That's the reason. You in the world of technology, if you're looking at the future, you can't always predict the economics. Even if you have a broad idea, दुनिया ऐसी होगी, to be specific and to come up with cash flow projects, very difficult. AI में हो रहा है ऐसे. So you feel कि जो entrepreneurs के एक वेग आइडिया होता है कि 10 साल बाद या फ्यूचर में दुनिया इस तरीके की होगी और मैं ये पार्ट प्ले करूँगा इसको, दुनिया को ऐसे बनाने में, बिल्कुल, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मनी अट्रैक्ट करते हैं वर्सेस पीपल जो बोलते हैं ओके ये मैं दुनिया बदलूंगा. हाँ, मैं दुनिया बदलूंगा और दुनिया भी बिल्कुल चेंज होगी. Betting on the future, or I will lead people to the future. That I was reading. It's very rare to find those, because if you make bets, I mean, आप ऐसे कोई 10-100 इन्वेस्टमेंट ऐसी करोगे, इनमें से शायद एक चलेगी. very high risk. क्योंकि वो एक्चुअली कोई एक ही बना पाएगा और उसका वर्जन ऑफ फ्यूचर राइट भी होगा. Probability. So many things need to go right. He will fail. That's why we talked about resilience. He may have to change his business model. Maybe he will fail, but at a minimum, he'll have to change his business model. Jack Ma, very big investment from Sonsan. When he first came to Sonsan had this vision, China, e-commerce, Amazon, देखा US में, huge success story. उन्होंने सोचा China में भी ऐसे होगा, हिंदुस्तान में भी ऐसे होगा. But at the time,
what Alibaba ka business was B2B. It wasn't his idea wasn't. So he had to evolve. So at times it's like, okay, macro vision hai, how the e-commerce will evolve. Great entrepreneur. Let's start with this and then we'll evolve the business model. Then we'll see kaise we'll see kaise hota hai.